जी सामने Thank you. Any more? I've never seen a shoot of my own where some of the first people to shoot me, lend me clothes was Falguni, Shane, and Peacock. So I have so much high regard for them because they're not just pioneers in presenting urban India in India and internationally, but they're also just amazing people who have evolved every few years, and essentially that's what all of us Indians do, and that's what we are. We stand for that, and the fact that we say yes to every opportunity that comes our way and don't look at it like an obstacle, and instead we look at it as something that we need to conquer and build out of. For me, Falguni and Shane both are creative people I look up to. Whenever I am actually confused in certain creative decisions, I always ask and seek advice from them. And the fact that they thought of me for this collection, it's so humbling. It's so nourishing for me to know as a person, because you guys mean the world to me. I've always had the best time interacting with you for shoots, for performances, for whatever I've done with you guys, and I really feel like I would love to go on a rooftop and scream as to how this particular collection that they've done. I think it's the first time in my Lakme Fashion Week career of walking I have ever wanted to own every single piece I saw on the runway. I can't tell you, the models just looked out of this world. Everything was wearable, everything was relatable and aspirational, which is just a combination that we all really want.
and I think you guys have nailed couture. You guys have nailed relatability and aspiration. I don't know how you guys do it. Thank you for having me. Thank you for making me a small part of this. And it was so much fun working with you, with Karan. It's just the nicest combination that I could have asked for. People who love fashion, people who enjoy fashion, and use it like an everyday expression. So it's been a wonderful, wonderful night. I hope you guys had fun. Yes. I have a very important question. This question is for all three of you. What was your yes moment? I think every show is a yes moment, and every plan to travel is a yes moment. It's a yes moment. Anyone offering me chocolate is a yes moment, mostly. I never say no to chocolate. I'm yet to say no to it. So I think doing the show was a yes moment for us because we've been showing in Bombay after a very long time. So I think this was a yes moment for us. And also having two beautiful showstoppers. One starting the show, one ending the show. So I thought that was a yes moment. Wonderful. Thank you so much. Please give a bite. Please. Thank you. thank you guys. एक्चुअली यही एक फॉर्मेट था जो फाल्गुनी एंड शेन का आइडिया था कि वी शुड हैव टू शो स्टॉपर्स, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम सब इसे बहुत एंजॉय करते हैं. हम इसे काम की तरह नहीं देखते. आज मेरा एक ऐसा दिन है जहाँ पर मैंने बहुत मज़े से तैयार हुई हूँ. ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ पर्सनल इवेंट. इट डिडंट फील लाइक आई एम वॉकिंग फॉर लैक्मे फैशन वीक. वो प्रेशर नहीं था और बहुत ईज था. आई थिंक इट वॉज बिकॉज इट वॉज अ फाल्गुनी एंड शेन, एंड ऑल्सो आई जस्ट लव वॉकिंग द रैम्प. It's a thrilling experience. Actually, contrary to popular belief, I like being extremely present and looking at people. Sometimes you can't see people because the lights are very bright. But और हर शो में possible नहीं होता. पर most shows I try to be present while I'm walking, and I'm very much there with everyone. I think it's finding your true, core and using that as an expression in everything. That जवाब दे रही है, रुक जाए. I think just staying happy and choosing happiness. That's the spirit. I think we're good, man. Thank you. Thank you guys. लैक्मे का 25th ईयर बिल्कुल. उसके बारे में कुछ कहना है और कैसा आपका होल एक्सपीरियंस और आगे कैसा रहने वाला है, आप कैसे और एक्सप्लोर करने वाले, प्लीज उस बारे में बताइए. अभी तो ऐसे कोई खास प्लान्स नहीं है, बट आई फील लाइक इट्स ऑलवेज वंडरफुल वॉकिंग फॉर लैक्मे फैशन वीक. इट्स द 25th year, and it's a celebration of everybody who does some amazing couture work, some amazing fashion. And it's actually about celebrating Indian craftsmanship with some spectacular Indian design. फिल्मी दुनिया में एनी अपकमिंग फ्रॉम योर साइड? बहुत सारे. आप हैंडल नहीं कर पाओगे इतना सारा. ऐसे आने वाला है. मैं आपको सबके मतलब ऐसे टिंग टिंग टिंग. I'll be on your notifications. Yeah. मना जी, आउटफिट्स की बात करें तो आप सबसे ज्यादा किस में कंफर्टेबल हो? वेस्टर्न है कि दोनों ही. एक्चुअली हम सभी जो हम सारे इंडियंस जो हैं, हम दोनों को बहुत खूबसूरती और आसानी से एम्ब्रेस करते हैं. हमारे लिए हम आई थिंक हमारे जहन में वो डिफ्रेंसिएशन नहीं रखते क्योंकि हम किसी में भी ढल जाते हैं. एंड आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही हमेशा कोर रहा है. आई लव एक्सपेरिमेंटिंग एंड आई गो इनटू व्हिचएवर आई नीड टू. आज का जो आउटफिट है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरा स्टाइल ऐसा है कि कुछ ना कुछ फ्लूइड होना चाहिए और कुछ बहुत स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. ये मैं काफ़ी वक्त से फॉलो करती आई हूँ क्योंकि ये मेरे पर्सनालिटी का कोर है. सो जब ये कपड़ों में ढलता है तो बहुत खूबसूरत लगता है. फिटनेस की बात करें तो सब पहले कहा जाता था कि मॉडल को एकदम होना चाहिए. जी.
रैंप वॉक पर, लेकिन आप जो है उस सारे तो माइंडसेट को तोड़ दिए हो फिटनेस पे, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? कभी कभी ट्रोल भी हुआ, लेकिन लोग आपको काफी सपोर्ट किए। I just think that beauty for me has a very different take, and I'm just happy that I love how I look, and I really enjoy my own self. So I'm just very happy, and I've got actually the kind of love I've gotten from people. I don't think anything that I could have done differently to get so much love. So I feel extremely loved, and I feel extremely cherished. Thank you. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Guys, have a good night. आ जाओ. Thank you so much.
अंबानी सर थोड़ा सा पीछे करेगी, थोड़ा पीछे करेगी। नूर जी वेट होल्ड सामने नील को सामने अलग सेंटर अलग सामने वेट बनेगा सामने देखिए वेट होल्ड नाइस सेंटर प्लीज सेंटर सामने देखिए एकदम अलग जी सामने ओ दादा थैंक यू और सोने पे सुहागा we had Malaika and we had Cobra and importantly we have RLAN backing our soul. Thank you very much. Good evening, everyone. Thank you again for being here. Hemant sir, welcome back to our center stage. I want you to tell us about this association with Namrata, and then I'm going to hand the mic to Namrata to talk about the connection, and then a little bit on why you're here, why you walked the line for Namrata, and what this means to you all. And it's also the 25th year of Library, and Malaika and I have a very long relationship, so we'd love to hear about that. Thank you. Something, I mean, and I can easily see the kind of work which has gone to put together this kind of connection. And we are very happy to collaborate from Reliance with Namrata to put together this kind of connection. We have used RLAN fabrics, different types, close to 50 plus varieties of the fabrics to put together this kind of connection. And just to mention here that these fabrics are sustainable in nature. They are produced out of post-consumer PET bottles. Reliance is committed to recycling. We recycle 2.5 billion bottles on an annual basis. We are growing. We will put together another capacity to go up to 5 billion bottle recycling on an annual basis. So lots of technology, lots of process re-engineering to put together this kind of very, very innovative, functional performance fabric in place to help these kind of connections to come in.
this kind of work, I'm sure Namrata will inspire many others and will create a kind of ripple in the society and in the industry. That's what we need actually, because all these activities put together, I'm sure will be able to contribute to reduction in the landfill waste, cut down on the carbon emission, and this will make our planet cleaner and greener. So from Reliance side, we are committed. We will work together with the stakeholders to make sure we contribute and we effectively contribute meaningfully in the society to serve this purpose to make our planet cleaner and greener for the next generation to come. Thank you very much. Tell us a bit about the collection, the association. First of all, I want to thank the RISE team, our Elan team, JC, Mr. Sethi for giving me this opportunity. And this was not a collection for me, this was homecoming for me. I love athleisure, I live in athleisure, so thank you. And the collection, as it's called, Athleisure Redefined, was about elevated activewear that goes from the gym to the lounge to your airport look. And the outfit that Malaika has is from their star fabric, green gold. I even know that, which is made from recycled PET bottles. That's the fabric. Yes. That entire outfit that you have on is made from green gold, the star fabric. Wow, that's which amazing. is made from recycled PET bottles. Wow. So I've enjoyed working on this collection, and I want to thank Malaika. Thank you. She's been my fitness role model for many, many, many years. So thank you. Thank you No for one having me. fitted this look better than you. And here, Cobra, who opened the show, is Sisterhood of Kilimanjaro. We've climbed Kilimanjaro, and that's why she opened this show, because she was the perfect person to open the show. So thank you, and over to you. Oh, yes. I think lots of firsts over here. First time I'm doing something with Namrata. First time I'm to be part of a collection backed completely by Reliance. So that's fantastic. The thought behind it is truly amazing. 25 years of Lakme, that's a big one. I've been part of Lakme through every single year, so I feel amazing to be back. First time I'm working with Coob, so that's also good. Yes, thank you so much, and I've had a fantastic show today. I think definitely one of my most favorite shows that I've done and I've walked. Thank you all for being here. Thank you for being supportive. Thank you for always showing a lot of love, and I shall see you soon. Have a great evening. Thank you so much. Sorry, Mr. Sethi, I love you. You know that. My true cheerleader. Thank you so much for that. I mean, really, like, meri jaan mein jaan aa gayi when I was like walking for the second time and I could just hear Mr. Sethi go like, yes, Cobra, yes, and thank you so much for cheering so many wonderful designers, for giving us all a platform. Thank you so much, Reliance, for thinking so much ahead in terms of nature and sustainability. And oh my God, now that I know what I'm wearing, I feel like I'm a genie in a bottle or something. Like, this is so cool. It's my first time ever, as Mala said, like, there's so many firsts. It's my first time ever to walk, to open the show, and to feel so comfortable. I think the last few years we've been talking about how athleisure has become like the stay, feel good fashion statement, and today your collection embodied all of that and more. And now I'm just thinking how I'm going to take these clothes, look this fashionable up in the mountains when we're like struggling. No, we could do this every time we come out of yoga. Yeah, and it is not like new for like Mala and me to be like, oh, nice, where's that one from? So thank you so much for setting the tone for so many years. Thank you for being my friend and my comrade doing yoga. Thank you for like directing so many of us towards fitness. And here we are celebrating athleisure at its best. So thank you everyone for coming. Thank you. Thank you.
Yes. Let's get a picture. Thank you. Yes, sir. Please come. Sir, this camera, please. What we're expecting next time, our Elan will be more innovative, more than what they've done. I think the stilettos need to go and they need to do something about shoes as well. So I was speaking to many of them. They will definitely come up with a fiber for that. Wow. Actually, we Can I have my? Only because you can't go to Kilimanjaro. These stilettos. Yes. You know we can't go to Kilimanjaro. It's probably are sitting in some of our meetings in Reliance. So because we exactly are doing that, we have a product which goes as a shoe upper. Fantastic. It's made of the products that we have, and this exactly will happen in the next event. Wow. But I really think this was a fantastic show. Thank you so much. Thank you all. Yay, everybody. I need a picture. Come on. Ma'am, this is the camera. Thank you. Thank you. Something about the best part of Black Map. I think just 25 years. Well, it's amazing. I'm really happy to be part of it. 25 years of Lakme Fashion Week. I think I've been part of so many seasons, so it feels like home. And I'm very happy to have worked for Namrata Joshipur. I think it was a fantastic collection, very sustainable, and what Elan has done with the fabric and everything in terms of athleisure, I think has been. हमने आपको ट्रेडिशनल में वर्क करके ज़्यादा काफ़ी अलग था, वर्क काफ़ी अलग था, आउटफिट काफ़ी अलग था। इसके बारे में जी, आई थिंक काफ़ी इंडियन अटायर में पहले मैंने वॉक किया। आई थिंक काफ़ी वक्त के बाद मैं एक वेस्टर्न आउटफिट इस किस्म का मैंने पहना। सो यस, इट्स डिफरेंट एंड आई लाइक्ड इट। बहुत ही कमाल का शो था। Malika, your Instagram bio speaks about food, fashion, and fitness. Which comes first in the order? Which F comes first, and how do you rate it? My 3 favorite Fs, so yeah, all of them. The most important thing. How can I live with any one of them? Without any one of them, I need food, I need fitness, and I need fashion in my life at all times. What do you think about growing the industry when it comes to the athleisure? I think it's a huge business. I'm somebody who truly stands for athleisure. I propagate it, I wear it, I am all for it. I'm really happy to be part of a brand like Reebok, which has over the years shown so much of faith in me, and I love the brand. So yes, I think athleisure is here to stay. Ma'am, you are a role model, you are a fitness icon. So, Nervous? मैं भी मुझे nervous अभी भी होता है। हाँ, of course, nervousness कभी नहीं जाती। your role model. Who's my role model? My mother? Yes. Thank you so much. Thank you. Bye. Start किया, showstopper बनी. How was the experience? All the please share. शो ओपनर भी होता है, पता है हमने शो स्टार्ट ही कर लिया। मतलब इट्स अमेजिंग मैन। आई थिंक इट वाज जस्ट सच अ फैंटास्टिक आउटफिट, राइट? It was bright, it was a plum, it was energy, and that's what I think athleisure should be. And I am so glad I was able to open wearing that outfit for Namrata Joshipur. So, thank you. Tell us about your collection and how do you like it? I think it's super comfortable. Like अभी ये थोड़ा गर्मी है, guys. That's the truth. But what an outfit! Like, can you imagine just like being chill, wearing this, feeling sexy, getting into a plane, traveling wherever? I think that's the beauty of athleisure. It's comfortable, it's fashion, and it's so much style and oomph. And I think everyone's come together. Most importantly,
all the outfits are made out of sustainable fashion and sustainable fabric, created by recycling PET bottles. So that's pretty awesome. आप भी आना और मेरा एयरपोर्ट लुक आप ही लेना मैडम. हाँ ठीक है, बाय. ये चैलेंजिंग रहता है कभी ऐसे जब आप बाहर जा रहे हो मैं सबको कवर करते चैलेंजिंग रहता है कि क्या पहने. नहीं यार, you should always be comfortable. आप प्लेन ले रहे हो, जंग लड़ने नहीं जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो. No, I was very confident, and thank you because everyone in the audience is so amazing, and everyone was cheering, and the paps were all there. It was amazing. Yeah, thank you. Lastly, your side is how excited? Dude, it's nice film, yeah. Bhaijan, I'm really excited for Sikandar. And it's going to be fun to have all of us go back into the cinemas and watch a film again. So I'm looking forward to that. And no, I haven't watched the trailer yet. Yeah, I'm packing कर रही हूँ और ramp पे चलने की तैयारी कर रही हूँ. Very soon, kids. Lastly, you want to say something for your audience? I love you all. Thank you so much. Thank you. Thank you. मेरा सामने मैडम मलाइका जी. मैडम look here. मैडम मलाइका जी. मैडम look here. Yeah, beautiful. Bye bye bye. हो गया. हो गया.
मैम राइट साइड, शिल्पा मैम राइट साइड, मोबाइल मोबाइल मैम राइट साइड। अरे कितना मिनट चिल्ला तुम भी। बोल देता भाई अजहर सर ये साइड में राइट मैम, अभी ये साइड में राइट में थोड़ा मैम, लेफ्ट मैम आपके राइट में अभी राइट में बुलाओ ना। नाइस पोज। अभी राइट में। अरे मचाओ, पीछे भी लोग हैं। मैं यहाँ पे ये इधर आइए, इधर आंदे भाई, इधर आइए, आंदे सैंडल पे पाँव मत दो। लाइट मारो। मैम यो यहाँ पे लाइट इतना ही है भाई। मैम इकडे बघा, पुढवी करे हो गया। चलो डन, बाइट करेंगे, बाइट करेंगे। एक मिनट मैम, उधर आगे बोलो, हो गया डन। बैठो, बिने बैठ जाओ, आगे आ जाओ। ये लेके ये इसे रख देना बेटा। आओ ना बस मैं गलत लगाओ रोटी हाँ रोलिंग भी नहीं हार जाओ भाई। You're looking so fabulous. You look like a warrior right now. I know. I feel like a gladiator. It's just fabulous. I just think it's given power dressing a new name. Yeah. What do you think about I mean, she is like gorgeous, and as you mentioned, she looks like a warrior, and in that in sari, so it's added things. Sari is like our favorite, and basically the whole idea behind this collection is my home city, a small city down Saharanpur, so which is like famous for wooden handicraft. So there's like lots of Karika worker, they used to migrate for like livelihood outside. So I thought let's start a project here, Jila Saharanpur. So I started it in Saharanpur and I started joining people. Now it's like more than 300 people, they working with me, they living with their family. So I'm trying to give a new name to the fashion, okay? How the fashion can be from a small town also. How like sustainable living can be from a small town also. Yeah. So this basically the one is Shilpa is made. This is made by like local artisan of Saharanpur, and this is totally handmade. Yeah. Ma'am. How you feel, Birchwood? I feel being attached to this kind of cause, and it is reaching out. I think it's a brilliant idea. Just if that It will not go here. So yeah. Okay. I think it's a brilliant idea, a great initiative to create fashion and have the thought of also creating livelihood for these people in Saharanpur, and I totally support the cause. And look at the kind of fashion Mohammed churns out. I think he truly is very innovative. It's very hard to work with wood, but he's made it look so glamorous. And it's given power dressing a new definition, so kudos to you.
forward. And I also love the fact that you've shown people in Saharanpur that you are actually supporting them and giving them a livelihood, which really is something that must be taken note of. So wonderfully done. Thank you so much. Thank you. It's not that heavy actually. It's very well supported. तो शिल्पा मैम, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी क्या रैंप पे चलने से पहले आपको भी नर्वसनेस या कॉन्फिडेंस कुछ होता है? कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं, नर्वस तो नहीं फील करती मैं, पर रैंप पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा प्राणायाम कर लेती हूँ, अनुलोम विलोम, और फिर मैं चलना शुरू करती हूँ. It's been 25 years of Black fashion. So, do you remember the first time you walked the rap? No, I mean, do you? I really don't remember the first time I walked, but I do remember walking many a times for Lakme Fashion Week, and every experience has been a memorable one. I've walked for designers who were just starting out, who are very famous today and doing extremely well for themselves. And I think this is a great platform to showcase, designers' work and what they believe in. And I've seen designers starting from scratch today, designing internationally. So I think the first platform that they've got is from here, from India. And I just think, it's an amazing opportunity. थैंक यू सो मच मैम. एक लास्ट क्वेश्चन है आपकी तरफ. मैम प्रैक्टिस कर. लास्टली ईद विश आपकी तरफ से, और सलमान सर की भी सिकंदर आ रही है, उस पर कुछ रिएक्शन आपको देना? ईद का हाँ हो गया. जो शिल्पा मैम सामने हाईलाइट करो एक बार एक साथ में. हट जा. ए Thank you. आओ दूसरे. देखो ऐसे वहाँ बोल रहे यार का रिस्पेक्ट करो. चलो भाई. पीछे ले. क्या बच्चा करके बहुत पहले से बोला था फोटो Wait. Ravi. Wait. One more look, center Jamila ji. इथे. Thank you. ये इधर है ना. Jamila ji, bye. Bye Jamila ji. Bye. Good night. पार्टी बना. नका बघू. Jamila ji. Bye. Bye.
अरे काय कोण भूमि लुक सेंटर 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 भाई दिया थोड़ा फोन खाली भाई भाई थोड़ा फोन नीचे लो भूमि सेंटर मैम राइट साइड भूमि सेंटर नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला अरे ना भाई भूमि जी राइट लेफ्ट लेफ्ट वाह भूमि चाहिए सेंटर में सेंटर ए भाई रुक जा अमित सर नाइस कलेक्शन सर अरे भाई ज्वाइन कर लेंगे मैम आज अरे हुए आपने एक रॉयल and Ishan is the boy.
But these are the outfits for the 9th of April. 9th of April only. I'm also going to tell Megan, let's make something. भूमि जी, सबसे पहले आप अपने आउटफिट के बारे में बताइए, कैसा है आउटफिट और लैक्मे फैशन वीक को इतना खास क्या बताता है? I think 25 साल हो गए हैं लैक्मे फैशन वीक के. It's truly a milestone year for them and I'm really thrilled कि उनके 25वें साल में मैंने अमित के साथ collaborate किया. I'm a very big fan of his work. He genuinely is very disruptive in his thinking. और मुझे आज जो मैंने पहना है एक beautiful corset with it. I love the styling as well. I have to tell you this. I love how you guys have put it together. This corset ये repurposed बनारसी साड़ी का बना हुआ corset है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा cool लगता है. I think whatever work अमित ने अपनी बनारसी साड़ियों के साथ किया है, it's always been a standout. Every piece has been spoken about so much and I'm very confident this one would be spoken about as well. And I think the world is going towards sustainable fashion and he really epitomizes it. Thank you. मुझे फोन के उसमें और हम लोग में क्या सिमिलरिटी है? हाँ, फोन नथिंग पर फोन के उसमें ये डिजाइन की गई है, तो आपको क्या सिमिलरिटी है? I think नथिंग के फोन I think वो भी एक बहुत ही डिस्ट्रप्टिव डिजाइन है, मैं भी एक डिस्ट्रप्टिव इंसान हूँ. I think that would be the similarity. I think can I answer for you? Please. I think एक फ़ोन का काम ये होता है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू दो इंसानों को जोड़े. I think Bhumi does that beautifully. I think through her skill, which is I think a technical skill mixed with emotion, she brings I think the human race together, and I think that is the similarity I find between the phone and her. The color palette was of course a lot of neutrals in the collection because I think as a classic wardrobe you definitely cannot let go of neutrals from your wardrobe, but with of course definitely more festive colors that quintessentially work for the Indian skin tone. I think the aspect of the Banarsi, which comes in heritage colors mixed with a lot of industrial material, was the palette of the collection. जब आप इंडस्ट्री में आए थे तो अगर आपके फैशन की बात करें, आपकी बिजनेस की बात करें, जो आपका कैरेक्टर था काफ़ी अलग था और आप जो देखते काफ़ी अलग ट्रांजिशन हुआ, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहिए? कितना ज़रूरी होता है लाइफ में ट्रांजिशन लेना, क्योंकि काफ़ी आर्टिस्ट है जिनका काफ़ी अलग ही चेंजेस आ रहे हैं. मैम एक्चुअली मैं ना किरदार टू किरदार चेंज होती हूँ. हो सकता है अगले 6 महीनों में कोई ऐसा कैरेक्टर आए जिसके मैं ऐसी ना दिखूँ, तो आप इससे यूज टू मत होना. आई एम एन एक्टर फर्स्ट. मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ अबाउट व्हाट आई डू एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपने आप को सिर्फ इंटरनली नहीं एक्सटर्नली भी एक कैरेक्टर के लिए ट्रांसफॉर्म करूँ. सो आई बिन लाइक दिस बिकॉज देयर वर 2 pieces ऑफ कॉन्टेंट दैट आई वॉज डूइंग जहाँ पे वो किरदार ऐसा लगता था, तो इसलिए भूमि अभी ऐसी लग रही है, चेंज हो सकती है वो. थैंक यू. मेरे हस्बैंड की शूटिंग हमने देख ली आगे, क्या आगे धमाका? आगे रॉयल्स आ रहा है. आई डोंट थिंक डेट आउट है तो मैं नहीं बोल सकती. नहीं, वो जल्दी आ रहा है लेकिन. थैंक यू so much. Thank you. ईद की कोई विशेष दे दीजिए. जी. सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक जी. हम सब बहुत एक्साइटेड है. थैंक यू. लाइट है बच्चों, लाइट लगा. ये तो नीचे रखेगा. Is only an abundant precaution. In the event of an unsafe occurrence, the emergency system will sound. It will temporarily suspend proceedings and you will be guided by our staff to evacuate the hall through the doors marked as exit. Enjoy the show. Thank you. चलो भाई. उधर ही रुको भाई, उधर ही भाई, वहीं पे विजय भाई कैसे हो? ऑल गुड. विजय भाई यहाँ पे लेफ्ट में विजय भाई हैप्पी बर्थडे एडवांस. क्या बात? 25 के सामने सर को नाम तो भाई विजय भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पे विजय भाई ये साइड. विजय भाई इधर, विजय भाई ये कैमरा, विजय भाई इधर, विजय भाई राजन पे कैमरा पीछे. हाँ वड़ा पाव. चलो
अरे मैडम थैंक यू इधर रुको आगे मत जाओ रे आगे मत जाओ अंशिका अंशिका वेट 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 आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ। आगे आइए इधर 25 किधर कर देगा? यार ओली wait अंशिका look here come this side little bit this side yeah perfect अंशिका look here अंशिका जी यहाँ पे देखिए लेफ्ट में। nice look wait ये रुक जरा तो फोटो मारते हैं अंशिका जी यहाँ पे देखिए। कैसे हो मैम? अंशिका जी यहाँ पे बहुत टाइम बाद दिख रहे हो। गायब हो गया आइए आगे मत जाना इधर आइए थोड़ा इधर आइए बराबर लुक अंशिका लुक सेंटर कैमरे में अंशिका। अंशिका जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अंशिका बेटा चलो थैंक यू मैम। थैंक यू अंशिका बाय शो के बाद मिलते बाय पार्टी कर लो। हाँ चल कर बाय चलो अंशिका जी इधर एक बार रुका फोटो मार यहाँ पर रोके ना। अंशिका यहाँ पे मैम यहाँ पे देखो। चलना थैंक यू बंद करो वेट लाइट अभी मिली थैंक यू। क्या वाइट लाइट का रखे नीली लाइट आईडी तो आया है। पार्किंग तो पार्किंग चलो एक और ए मित्रा हाँ थोड़ा उधर राइट जगह ही नहीं भाई। अनिल को नहीं मिला आयशा शिवा के बाजू में। बाय थैंक यू एक बार इधर आइए ना, एक बार ले बात चल। किसको नहीं मिला ले? उनको नहीं मिला हेलो ना, इसके को बुलाया ना भाई। सेंटर ये क्या अवंतिका मार्क्स अभी आएगा। अवंतिका सो गया था भाई हो रहा है। थैंक यू पहले तो गाड़ी ले लो अच्छा तू है क्या? प्लीज प्लीज नहीं हो रहा है। मैं आपके सामने प्लीज कार्ड किधर है
अभी देख टाइम है रे टाइम है दादा फोटो चाहिए दिखा भी नहीं वो ये देखो फोटो फोटो किसमें था हाँ एक साथ कर वाले फोटो करे अरे शो हटा उधर उधर मैडम रुको रुको बड़े कैमरा ये 250 वाला क्लिप क्लिप एक ही वीडियो रैम वाला बाकी सब फोटो है खोलो एक बार इधर रैम रैम हाँ ये बस एक ही नहीं होना है नाइट के लिए वेट अंकल रुक जाओ वेट मैडम वेट मैडम थांबा इथं बघा शिवा इल्मा था शिवा ने तो मेरे वेट 15 किलो वेट मैडम वेट 15 किलो सामने मैडम मैडम लुक हियर नाइस वाह ब्यूटीफुल नाइस वेरी नाइस अली मग के ना पागल है करे तू लाइट दिया चल गाली क्यों देता तुम पागल भाई कुछ ज्यादा ही लाइट देगी तेरा वेट वेट गाइस थैंक यू भाई लाइट चेंज हो रहा है हाँ दादा बोलो हॉटो पे रखा गुड यहाँ अरे क्या भाई मैडम लुक यार अंजलि सामने मैडम रानी बोल सामने देखो मैडम वेट लुक हियर राइट साइड look here. Wow. ब्यूटी हो जाएगा जवानी का शशि कपूर सब आ जाओ ओह ये बच्चा है बाकी नहीं है ये तो थोड़ा नीचे रख भाई कैमरा में बहुत लोग है भाई मचाने वाला अच्छा क्या हो गया पास पुश इधर पास पुश वहां पे तो ऐसे नहीं चला रहे हो सर ये आता है सिर्फ पहले इधर आइए भाई लाइट ही नहीं है यहाँ पर कपड़े पे इधर अरे पहला उधर हो गया संदूस क्या कम ऑन दिस सेंटर अनिकेत साउंड पहले उधर दे दो पहले जाओ उसको उधर नहीं आ रहा बराबर अरे अनिकेत तो हाथ दे दो उसको दे पहले गिर रहा है बहुत ज्यादा है वहाँ पे वो लाइट बराबर इधर आ जाओ हो जाएगा सफेदी चपुड़े उजाला बस अभी स्टार्ट हो गया सेंटर मत तोड़े आलू सेंटर यहाँ पे सेंटर कैमरा उधर सेंटर भाई मेरे को नहीं मिला अच्छे से संदूस स्प्लिट विला में हो गया संदूस हाँ स्प्लिट सूरज इधर आ जा हेलो आर यू हेलो सामने देखे ना हेलो लुक सेंटर समोर एकदम हेलो तिकडे हां लुक सेंटर कैमरा फिर जा इसको मान ले वेट देखो इसको फोटो देखो ये मान ले हेलो जाओ देखो जल्दी दो 2 मिनट थैंक यू पैर ओके हो गया भाई मैडम वापस आइए नहीं आप आ जाओ
अरे यार कैमरा ऑन नहीं होना, कैमरा ऑन ही नहीं होता तो जब वापस थैंक यू लाल, थैंक यू अभी हाँ हो जाएगा, अब वो उधर गया वापस। थैंक यू। पहले मूवी खत्म कर रही है, क्या वापस गया वापस देने वापस कौन नहीं खाली लाइट दे दो मचाएंगे ना अभी स्टार्ट डालो देना थोड़ा सा यहाँ पे डालो बैठिए आप तो भैया है ये हल्दी पीछे आना। थैंक यू दो सब बोलिए So this collection is called Echo and it takes inspiration from the fluidity of water. We talk about how organic evolution and upcycled textiles can lead something to be studied. We've also tried to push the boundaries of craftsmanship that we use within our studios. We love the craft that India has to offer, but at the same time, I feel like we need to make it more relevant and more. I think that something that resonates with people a little bit more. थैंक यू आपको Yeah, so hi, I'm Praveen Kaur Bhamra, also known as VKB, and I'm the content creator. I opened for her show. And I feel it's such a great opportunity for creators to associate themselves with such brands that believe so much in inclusivity, and because that's what I really stand for. And she's designed such amazing pieces. So it was my pleasure and honor to have my first walk with her. So yeah, it was a lovely show. I hope you guys enjoyed it too. थैंक यू Thank you. Thank you. थैंक यू The video you're doing, man. Thank you, guys. Aim for. Designcraft is a marketing platform. It's a social enterprise, part of the Somaya Group, and we aim to be a multi-artisan designer platform, which which showcases the artisans as the heroes. They create their own identities, their own brands, and we are a platform that will give them the wings to fly. So thank you all for being here, and actually these are the heroes today, and I would like them to say a few words. This is it. मेरा नाम खत्री मोहम्मद जैद है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और मैंने आज इधर आया तो पूरा इतनी मेहनत की थी, वो आज रंग लाई है। और मेरे थैंक यू। मेरा नाम शकील अहमद खत्री है और मेरा क्राफ्ट बाटिक प्रिंट है और मैं मद्रासा बिलोंग करता हूँ। नील बाटिक है मेरा। और आज लेखनी में मेरा जो शो हुआ है आर्टिजन सब का, तो इतना फीलिंग हो रहा है, अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि हम बिलीव नहीं कर सकते। वो बात करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। तो बेसिकली जो हम ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जो हैं वो ट्रेडिशनल मोटिव को लेके, ट्रेडिशनल कलर को लेके काम करते थे, लेकिन उसको मॉडर्न कैसे करके उसको प्रोडक्ट बनाना, वो हम हमारे टीम के ऊपर किया था। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। थैंक यू टू सोमया कला विद्या एंड और मेरा ब्रांड का नाम है मस्क बांधनी। तो मैं अपने ट्रेडिशनल के साथ में रह के न्यू डिज़ाइंस बनाती हूँ एब्स्ट्रैक्ट करके। और यहाँ लेक में मैं अपना पूरा कलेक्शन प्रेजेंट करके बहुत खुशी हुई है। आई एम वेरी हैप्पी। हेलो, मेरा नाम वन करमता बाबू भाई है। मैं बिजोड़ी से हूँ और मैं मशहूर विविंग की आर्टिसन डिज़ाइनर हूँ। और हमें यहाँ पे लेकिन वहाँ के बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे जो हमने जो कलेक्शन बनाया था वो देख के ऐसा लग रहा था जैसे हमारी कला जिंदा हो गई है। तो आई एम सो हैप्पी। मेरा नाम मुबशिरा खालिद खत्री है। मैं अजरक की आर्टिसन डिज़ाइनर हूँ और मैं अजरक में फ्री हैंड पेंट करती हूँ। क्राफ्ट और आर्ट को कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाती हूँ।
और आज जो यहाँ पे कलेक्शन शो हुआ है उसको देख के मतलब हमारे क्राफ्ट को इस स्टेज तक लाना वो बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। थैंक यू।